everyone, this is Ishaka Jaga coming up with the next session of simplifying the editorial. Now, in this session, we bring the editorials for you, which are more important from examination perspective. We analyze it for you, simplify it for you, so that you don't have to take go through the entire newspaper. Now, let's move ahead. The first is the China's two-child policy. The China has come up with China is removing its two-child policy. Now it is coming with three-child policy. Now, understanding article talks about in little background that 6 years after abandoning the one-child policy, before 2013, China had even 2015 per se, China has one-child policy, and it was a plan of Mao's intrusive family planning. It wanted to control the population of China to that an extent that a one-child policy was imposed on all the citizens. So it was Mao's family planning initiative. But what has happened recently is that the China has its population above 59 has reached the 18.7%. And to understand how this is a grave concern for China is for the fact that old age population in India is merely 8% right now. And because of which our major part lies in the demographic of the working age population, which gives an edge over the other countries. But China's population is 18.7 and it is rising rapidly, because of which the demographers are afraid that China may get old before it becomes rich, because China is trying to become a power, a great power right now, and people are even after coming with a new child friendly policies and framework, people are not adopting to have more number of childs because of various reasons. So because of which the China is worried ki people may China's aging population may create actually fear for India, for China. And it article also talk about because of the intrusive family planning of the China, it has not only created a change in demography in terms of the population is getting old, but it is there is a deep gender imbalance in Chinese population as well. Now what happened was, earlier, because of the China's one child policy, now there was so there was a pressure on the family to have just one child. Now they also started favoring son only, and daughter were aborted for various reasons. And because of the abortion of the daughters, so gender, it is not a gender it is not a very female friendly a demography in China. They started aborting the female in their family and they started having child, because of which the female are lesser in number and male are higher in number. Also the aging, so this is not the ideal demographic a map for China. Instead, China has something like this. It's its age population, it's even people in the higher age are getting higher, because of which an old age population are considered as liability, because they do not constitute the workforce. Instead, state has to provide various social security measures to them in terms of social protection, life insurance, health facilities, and various kind of geriatric facilities that the state has to provide. So now China is worried कि उसकी dependent population बढ़ने वाली है और workforce कम होने वाली है. Now to understand कि ये problem होती कहाँ से create है, was in 1979. Mao की जो one child policies, Mao imposed Mao's one child policy was imposed with the slogan of later, longer and fewer. कि after some time have बच्चे थोड़े late करो, थोड़े और थोड़े कम करो. So China came up with the one child policy. So उनके this became the motto of the China. But in 2013, China first time started realizing कि इसकी demography unfavorable होने लगी है. So the China allowed couples to have second child only if either of the parent was one child. अगर उनमें से कोई एक भी parent अगर one child ही था अपने parent का, तो the China allowed that couple to have two child. But then China realized कि even that is not going to मतलब उसकी demography नहीं change होने वाले. So in 2015 China adopted two child policy, saying कि बच्चे दो ही अच्छे, दो काफी हैं. China thought that having a two-child policy will stabilize the demography, but soon they realized even that is not solving the problem. And in 2020, when China adopted a three-child policy, कि अब आपके 3 बच्चे भी हो सकते हैं. This is how China intrusively actually is guiding people to have the number of child as Chinese state is demanding.
Now article talks about कि चाइना की जो China has always has adopted a state like demographic intervention, कि state ने हमेशा से ही intervene किया है, but अब उसको अब उसकी the thing has gone unfavorable for the China के against चला गया है अब वो. Now even it is it has changed the policy and asked the people to have more number of kids. The family are not adopting to do so because of child rearing cost. बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें बड़ा करने के लिए, उनकी हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए अब बहुत it requires a tremendous amount of education. और देखा जाए तो families को आदत हो चुकी है कि with lesser number of kids their family is more stable, they don't have to invest much. तो China के पास China has to deal with the demographic issue because its people are not willing to have more number of kids. Now China अभी भी intrusive method of control, demographic control करने की कोशिश कर रहा है in terms of now it has come up with a reward and assistance system. That means who are going to have greater number of kids, it is going to provide them reward or financial assistance in terms of to have more number of kids. But the article talked about कि China के जो intrusive method हैं in terms of earlier it used the method like forced abortion, sterilization, which are still reported in part like Xinjiang of the Muslim majority Xinjiang region of the China has not worked in its favor. और इसी के साथ ही इंडिया को एक caution warning देता है कि state should be careful while they adopt a similar kind of method that is being adopted by China, because recently various state are coming with measures even in Lakshadweep कि any person having more than 2 kids will not be able to contest panchayat election. So this is considered as a state demographic intervention, and in long run they may not be they may not come in our favor. Next is the COVID and India relationship with the world. So this article which actually which was there is I'm sorry I could not update it, but this was above ऊपर वाला article था ये, was written by the Sohasini Heather. An article talked about how the 2 waves of COVID have changed the priority over the world, कि 2 waves से not just relationship बदलने लगे हैं, countries की priorities भी बदलने लगी हैं. It also talked about how India की priority अब relationship बदल रहे हैं in terms of COVID diplomacy too. हमारे पास हमारा task है कि हम जितना हो सके immediate oxygen और medical supply दूसरी country से ला सके. This is our immediate concern. We are trying to establish relationship, we are trying to establish contact so that we can have the as much as possible of vaccine, medical supply, oxygen supply. We are talking to India and Russia in order to get the remdesivir and the favipiravir from these countries. And then the author talks about India, हमारी country में जो shortage हुई है उसके लिए 3 fault responsible हैं. पहला, failure of the government for the placing procurement orders in time. पहले से ही हमें बाहर की countries not just बाहर से, even अपनी country से ही timely procurement करना चाहिए था, because of the two companies which are engaged in manufacturing, timely procurement should have been done. Second is failure of the India-based company to produce vaccine on time. Even they did not meet the deadlines. And even next is the failure of the Minister of External Affairs to not just export but import. Because at that time our country was busy in exporting, but we didn't think of importing. If we are exporting vaccines to LDCs nations, that is the economies with a weaker economy, countries with weaker economy, we should have also thought about importing as well, because even our country was in need. So this is how article talks about कि this is we have we at 3 particular instances we have failed. Now challenges for the diplomats is to compensate for this failure and shortfalls. ये जो हमसे हुए हैं इसके लिए compensate करना होगा. Diplomats are working, जैसे अब हमारी जयशंकर has visited the US in order to get vaccine from them, AstraZeneca doses from the US, because US have good stockpile right now. So this is what we're trying to do. We're trying to buy more stock from the US manufacturer like Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson in shortest possible time. तो यहाँ पे हमारे diplomacy का acumen दिख रहा है. So then after talking about what is the challenge for the diplomacy, article talked about कि what is that India should do, India को क्या करने की ज़रूरत है. It talked about
it has to manage the fallout of vaccine collapse जो हमारा हुआ था, because many countries were dependent on India and on the basis of vaccine हमने बहुत कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप मैनेज किए हैं, जैसे अफ्रीका है, भूटान है, और आर्टिकल भूटान का ही एग्जांपल देता है कि भूटान मैनेज टू प्रोवाइड फर्स्ट डोज टू 93% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिकॉज इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग इट्स वैक्सीन, बट बिकॉज इंडिया कट इट सप्लाई अब अपनी सेकेंड डोज नहीं दे पा रहा है. नाउ इट इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन द यूएस और चाइना, which is like troubling to us because हम अपना strategic edge lose करने लगे हैं हम. तो this is how this is something India should be worried about because हम neighbor में ही अपना strategic edge lose करने लगे हैं. And this is something जो कि आप एक PSIR या अगर आप student हैं, this is important for you, और paper 2 के लिए भी important है. You know how in the times of COVID or in terms of pandemic India will have to come back with its leadership, जहाँ पे सिर्फ वो ना सिर्फ अपने लिए बाकी दूसरों के लिए भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करे और अपने गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सके. तो आर्टिकल टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव टू ब्रिंग बैक ट्रस्ट इन इंडियाज फार्मेसी. तो उसके और दिस इज द फर्स्ट सजेशन जो आर्टिकल दे रहा है कि इंडिया को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि हमारी फार्मेसी में ट्रस्ट आ सके, नॉट जस्ट इन डोमेस्टिक लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल. Also, then article talked about कि India should work to bring back accountability and transparency in what caused this COVID, जिससे 3 मिलियन लाख जान जा चुकी हैं. And US is very adamant on this. US इस पे काम कर रहा है कि you know how it leaked from other country, how the China dealt with it, and what were the factors responsible. So article also says कि इंडिया को भी इसमें लीडरशिप लेनी चाहिए. थर्ड आर्टिकल का जो सजेशन है, इट टॉक्स अबाउट कि रिवैम्प द 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन टू इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो कि इस तरीके के चीज से, इस तरीके के उस सिस्टम से अच्छे तरीके से डील कर सके और एक सेफर तरीके से बिल्ड बैक कर सके. मतलब कि दिस आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, इंडिया विल हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर सो दैट वो अपनी इमेज को भी रीबिल्ड कर सके. सो दिस इज द आर्टिकल ने जो सजेशन दिए हैं कि कैसे कोविड की वजह से हमारी डिप्लोमेसी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहे हैं. एंड आर्टिकल ऑल्सो गिव द सजेशन कि कैसे आप इंडिया अपनी इमेज को दोबारा सुधार सकती है. सो द नेक्स्ट इज द चाइल्ड लेबर. This article this article and article was very informative in terms of child labor because at times of COVID बच्चे बहुत ज़्यादा impact हुए थे. जैसे आज ही हम NCPCR की रिपोर्ट देख रहे थे and the reports talked about how many kids became orphan due to the impact of COVID. Now the article talks about it due to COVID, the entire mechanism that existed because of pushing children into the child labor has become magnified. अब बच्चे ज़्यादा चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट कोविड ने इसको मैग्नीफाई कर दिया है, कोविड ने उन जो पूरा मैकेनिज्म था जिससे कि बच्चे चाइल्ड लेबर में जाते थे उसको एक्सपोज कर दिया है. सो आर्टिकल देन गिव्स द डेटा. इस डेटा को आप लिख सकते हैं किसी डायरी में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नियरली 152 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर इन चाइल्ड लेबर. मतलब पूरी दुनिया में 150 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर हैं. और इंडिया का डेटा देखा जाए तो सेंसस 2011 का डेटा बोलता है कि 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन हमारी कंट्री में है जो कि 5 से 14 साल की उम्र के हैं. तो 10 मिलियन चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. 150 बच्चे ओवरऑल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. और इसमें से 8.1 मिलियन आपके रूरल एरियाज में हैं इंगेज एज अ कल्टिवेटर एंड लेबरर. तो 10 में से 8 मिलियन आपके रूरल एरियाज में ही एग्जिस्ट करते हैं जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं. Then article talked about relationship in between education और child labor के बीच में. Article says कि यूनेस्को के एस्टिमेट के हिसाब से nearly 38.1 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं. और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बहुत आसान है उनको चाइल्ड लेबर में लेके जाना. तो लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द कोरिलेशन कि देखिए दिस इज द सर्वे हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन. 10 से 14 के साल के सिर्फ आधे ही बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कवर कर पाते हैं. जस्ट यू कैन सी जो 6 to 13 एज में लिटरेसी हमारी 95% है, बट 14 से 17 की एज में हमारी लिटरेसी 79.4% है और 80 नंबर में हमारी लिटरेसी 26.4% है. अगर आप इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे ना, इस तरीके का पिरामिड स्ट्रक्चर आप बना दें और उसके बाद अपना शो कर दें कि कैसे आपकी एजुकेशन ऊपर की तरफ जो हो रही है वो कम हो रही है. आप जितने नीचे से ऊपर जा रहे हैं आपका एजुकेशन पॉपुलेशन कम हो रहा है, आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आपका बढ़ जाता है. तो ये कोरिलेशन बताता है.
और बच्चों को जब एजुकेशन नहीं मिलती तो एक विशेष साइकिल को ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि यू हैव लेसर एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है तो आपकी जो स्किल होती है स्किल कम हो जाती है, स्किल कम हो जाएगी तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो बच्चों को एजुकेशन फिर कम मिलेगी, तो बच्चे इस विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ही फंस जाते हैं। ओके, सो दिस इज द कोरिलेशन कि एजुकेशन कम है तो चाइल्ड लेबर बढ़ रही है, और अब जितना ऊपर जा रहे हैं, जितनी एज बढ़ रही है, उतना ही बच्चों को एजुकेशन कम मिल रही है। सो आर्टिकल मेक अ स्ट्रॉन्ग पिच कि ना बच्चों को एजुकेशन देने की जरूरत है। बट देन आर्टिकल ऑल्सो सेज कि वेरियस गवर्नमेंट स्टेप्स की वजह से, राइट पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से कैसे चाइल्ड लेबर कम हुआ है। जैसे पहला है नरेगा, MG नरेगा एक्ट, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि अनस्किल्ड फैमिली मेंबर्स को एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो जो इनकम उन्हें मिलती है वो बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाते हैं। सो दिस इज अ टाइमली इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और इवन मिड डे मील स्किल प्रोवाइड करता है स्कूल में टू एवरी लाइक चिल्ड्रन जो कि एक डिसप्रिविलेज अनप्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, which is the right intervention. Second is talk about the national child labor project, जो कि सारी पॉलिसीज को कन्वर्ज करता है, जो कि चाइल्ड लेबर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। So which is also a good step. Next is India has also ratified the International Labour Organization Convention 138 and 182, जो कि चाइल्ड लेबर से ही बिलोंग करते हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है, आपको कोट करना है अगर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए जो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज पेंसिल पोर्टल है, जो कि सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर, जो कि NGOs हैं और जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में कंसंट्रेटेड एक कोलैबोरेशन भी लेकर आता है। सो आर्टिकल टॉक्ड अबाउट कि नो राइट पॉलिसी इंटरवेंशन से किस तरीके से हमारा चाइल्ड लेबर कम हुआ है, बिकॉज 2001 के सेंसस में हमारा चाइल्ड लेबर 12 मिलियन था, पर 2010 में हमारा 10 मिलियन हो गया। सो दिस रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट intervention at right time. Next is what caused the child labor in terms of कि in order to deal with child labor आपको उसके causes पता होने चाहिए जिससे कि आप effectively deal कर सकें। So like first is सबसे पहला जो reason है that is poverty, weakening economic situation, unemployment and reducing income। फैमिली के पास इनकम नहीं होती, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, अगर बाय द वे फैमिली की इनकम है भी, बट कोई अगर इमरजेंसी डिजास्टर या कुछ भी आता है, फैमिली की इनकम डिप्लीट हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन उनके पास कुछ होता नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड दे हैव टू पुश देयर चाइल्ड इनटू द चाइल्ड लेबर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फैमिली एटलीस्ट टू सस्टेन। तो पहला रीजन है इकोनॉमिक, सेकेंड है आपका लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, एंड द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ क्लोजर ऑफ स्कूल एंड अब जो कोविड के टाइम पे आपके स्कूल और कॉलेजेस बंद होने लगे हैं। And various report talked about the children who have dropped out right now, they have lesser chances of being coming back to school, तो वो वापस स्कूल में नहीं आएंगे most possibly। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपकी जो एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है तो उससे डिजिटल डिवाइड है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास एक्सेस टू ना तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, ना इंटरनेट है, ना ही लैपटॉप है, फोन है। जब उनके पास ये है ही नहीं तो जो करंट एजुकेशन के में वो जा ही नहीं सकते। एंड वी सॉ देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन इन बिटवीन द एजुकेशन एंड चाइल्ड लेबर। तो NSS का एक इन्होंने रिपोर्ट कोट के विच सेज दैट ओनली 24% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटीज। इसमें से रूरल एरिया में सिर्फ 15% है और जो आपकी जो 42% आपके अर्बन एरियाज में, विच इज लाइक अ वेरी ग्रिम पिक्चर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में जा सकते हैं। देन आर्टिकल कंक्लूड विद सजेशन कि आपको क्या करना होगा। सिंस राइट पॉलिसी इंटरवेंशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो पहले आपको राइट मिक्स ऑफ पॉलिसीज और प्रैग्मेटिक इंटरवेंशन लाने पड़ेंगे। दूसरा, आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि आपकी बिकॉज जैसे बचपन बचा आंदोलन है, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही हैं चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। आपका जो कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचा आंदोलन है ना, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप जितना हो सके अपने आंसर में सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव लिखते रहें, तो बचपन बचाओ आंदोलन इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विद द चाइल्ड लेबर फैमिलीज, कि आपकी जो फैमिलीज उसमें जो उसमें एंगेज हैं वहाँ पे बिहेवियरल चेंज लेकर आओ, बिकॉज इंडियन फैमिली में बच्चों का एसेट माना जाता है
कि अगर पैदा हो गए हैं तो जितना जल्दी हो सके अगर एम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे तो फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी, बट यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, उनके लिए सोचना होता है कि यू नो लाइक गिव देम एजुकेशन सो दैट यू नो अपने नॉट जस्ट इनकम, वो अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर सके, तो आपको उनके फैमिलीज के साथ भी काम करना पड़ेगा। With this, we are done with today's session. Thank you for staying connected with us. Now stay at home, stay healthy, and stay safe.